Good evening all, you're watching the news now and I am Bindia with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. India raised the issue of China. Defence Minister Rajnath Singh was strict about encroachment on the borders. Telangana's medical college engulfed with corona, 43 students among infected. And PDP stages sit-in protest in Jantar Mantar, demands restoring Article 370 and 35A. And Myanmar leader Aung San Suu Kyi jailed for 4 years, convicted for inciting discontent against the army. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has raised the issue of Chinese encroachment in the 2+2 ministerial dialogue. The way Rajnath Singh has raised the issue of Chinese encroachment with the foreign and defence ministers of Russia in his statement is very important in itself. In fact, after the audacity of China in the year 2020, the tension between India and its northern neighbour is not taking the name of the decreasing order. It would not be wrong to say that the gap of suspicion and rivalry between the two countries is increasing day by day. 43 students and staff of Anand Rao Institute of Medical Sciences at Bomakal in Karimnagar district of Telangana have been found infected with COVID-19. The district health officer of Karimnagar has given this information, and according to the media reports, 33 of the infected are college students and the rest are college staff. The college administration had conducted a COVID investigation of about 200 students and staff. Most of the infected students are hostel residents. According to the news reports, the students took part in the several programs of annual day celebrations held recently, after which symptoms of COVID were seen in some of the students. College and hostels have been temporarily closed down and the students have been sent home. The investigation reports of many more students and staff are yet to come. The Finance Minister Nirmala Sitharaman today addressed the Lok Sabha and said that SEBI is monitoring potential losses of initial public officers, IPOs, NSEs and BSE trading platforms are declared as critical infrastructures and that they are being digitally safeguarded from cyber attacks. The People's Democratic Party leaders staged a sit-in protest at Jantar Mantar in New Delhi today. The party president Mehbooba Mufti, along with other members of the party, demanded restoration of statehood, 35A and Article 370 in Jammu and Kashmir. The members also demanded a planned solution to Kashmir issue at the national level. सिक्योरिटी फोर्सेस के परमानेंट घर बनाने के लिए जम्मू में कुठवा में हमारे लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं ताकि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको दिया जाए। तो सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। हमने तो इस मुल्क से इसलिए हाथ मिलाया था कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ सेकुलरिज्म है, मगर हमें लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क गांधी का मुल्क नहीं बल्कि गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है और साथ ही कश्मीर को भी गोडसे का कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है, जम्मू और कश्मीर और लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, 22% हमारे यहाँ बेरोजगारी है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनको निशाना बनाया गया, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं हथियार की तरह, जिनको इस्तेमाल करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। हमारे बिहार से गोलगप्पे वाला आया, वो मारा गया, वहाँ पर उसका खून बहा। हमारे कश्मीर के बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाता है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई पूछता नहीं। अभी नागालैंड में कल वाकया हुआ, फटाफट FIR दर्ज हुई, हालांकि वहाँ भी किसी को सजा मिलने वाली नहीं है, मगर FIR दर्ज हुई। मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जब जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, तो उस वक्त हमें लाश के लिए भी भीख मांगना पड़ता है, तो हमें लाश वापस। जम्मू कश्मीर में जो सेक्टर हटाया गया, ये विकास का पैमाना बता रही है सरकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में, और आप लोग कह रहे हैं कि वो जो है फिर से लागू होना चाहिए। क्या लगता है, उम्मीद है खासकर किसान आंदोलन के बाद किसान कानून वापस लेने के बाद? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क खाली बीजेपी का मुल्क नहीं है, ये मुल्क यहाँ के 101 अरब और 20 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा समझेंगे, उनकी तकलीफ समझेंगे, जिस तरह कृषि कानून वापस लिया गया है, एक वक्त आएगा न सिर्फ 370 और 35 से, बल्कि इसके अलावा भी कुछ हमें मिलेगा ताकि जम्मू कश्मीर
समस्या का समाधान हो, जिस तरह वाजपेयी जी ने कोशिश की। Paying rich tributes to Dr. Ambedkar on his death anniversary, Shri Guru Ravidas Sabha Jammu today organized a floral tribute ceremony, recalling him as Baba, the father. The members remembered his selfless service and efforts of Dr. Ambedkar towards society and India as a nation. हुए आंसू के दरिया बहते हुए इतना गम था उस दिन, पूरे देश के अंदर इतना शोक था कि हम उस महान हस्ती को आज छत छत नमन करते हैं, जिस महान हस्ती ने इस देश को अपना दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया। आज फक्र है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया। आज हमारा जो देश है उस महान संविधान के जरिए चल रहा है। आपको पता है कि हमें जितने भी अधिकार मिले, हमें जितने भी अधिकार, हजारों सालों की जो गुलामी की जंजीरें कटी, वो इस संविधान के द्वारा कटी। तो आज हम The Jammu and Kashmir unit of Shiv Sena Bala Sahib Thackeray staged a protest against the opening up of open gyms being set up in every ward of Jammu city under Jammu municipality. The unit president questioned the authority taking the responsibility of these open gyms that will be run without trainers. He alleged that the GMC is misusing the revenue earned from the taxpayers and administration is watching as a mute spectator only. उतना गलत तरीके से किया गया व्यायाम घातक भी है। तो हमारी मांग है कि जितने भी जिम लगाए जा रहे हैं उस रणनीति पर अभी लगाम लगाई जाए और जो जिम लग चुके हैं वहां पर ट्रेनर नियुक्त किया जाए ताकि जनता इसका भरपूर फायदा उठा सके। बिना ट्रेनर के, बिना, देखिए हम स्कूलों की सुनते थे कि शिक्षक नहीं है स्कूल में, हम हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर के अंदर देखते थे कि डॉक्टर नहीं है, और म्यूनसिपैलिटी ने जो शुरू किया है जिम का काम, यहाँ पर जिम ट्रेनर ही नहीं है और उसके बिना जनता को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी जो एक और है कि इस समय कोरोना काल फिर से शुरू हो रहा है और वहाँ पर कोरोना SOP की सरेआम इन जिम के अंदर Celebrating the World Soil Health Day today on theme Swasth Dhara Khet Hara at village Ganeshu Chak Panchayat Surachak block in Zone Mandal, the Agricultural Subdivision Mud organized a program conducted by AEO Mandal where 30 soil health cards were distributed among the farmers. The subdivisional medical officer Dr. Ashwini Jojra sensitized all on unwanted and excess fertilizers application leading to drastic reduction in soil productivity, water pollution, serious health hazards to humans and animals too. असें ये बड़ी खुशी है कि तो साढ़े विच आनी है, मतलब ये प्रोग्राम किया वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डेज। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ DAP ਨੇ ਡਾਇਆ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ है, वो चीज़ें से मिले अगले वीजा फसल आना वो चीज़ें से पानी मिले वो अस्पागे से फसल जो है ना क्या मिलेगा पर असें हमारा यूरिया काट पाना। Reliving the memories of school childhood days, Army Goodwill School Sopor conducted the annual alumni meet with the alumni of AGS Sopor. The event aimed to build a platform to share experiences. Inclement weather could not hamper the spirit of Soporians as total of 50 alumni graced the event and interacted with students of the school. Alumni focused on the contribution made by the school and the staff in showing their life the path of success and happiness. Talking about the facilities of the AGS school, I think it has the great, the infrastructure. जहाँ यहाँ का infrastructure बहुत ही अच्छा है. Even the teachers, the faculty, the education level and in order. और जो और यहाँ पे co-curricular activities है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है. Thank you. Valley has witnessed its fresh snowfall yesterday and heavy snow has led to closure of Mughal Road and other roads towards Sonamarg and other hilly terrains of Valley. However, the beacon at service of road and transports is trying its best to provide relief to the stranded vehicles and passengers. The roads are being cleared of snow on a speedy trace. Moving on to the world of entertainment, Sara Ali Khan, Akshay Kumar and Dhanush are bringing Atlantean love story on the occasion of this Christmas. Ever since the trailer of the film has been released, the fans are eagerly waiting for its release. Today, the second song of the film has been released and Atlantean's first dance song, Chaka Chak, has already been released and it's being well liked. Sara Ali Khan is seen dancing in this new song and now the second song of the film, Reet Zarasi, has been released. This song in the voice of Arijit is touching everyone's heart.
And a good news from the world of sports. India beat New Zealand by 372 runs on the fourth day of the second and final test at Wankhede Stadium to win the series 1-0. India's Ravichandran Ashwin took 4 of 34 while his spin bowling colleague Jayant Yadav picked up 4 of 49 as New Zealand were all out of 167 in the first session, chasing 540 for victory. The first test in Kanpur ended in a draw, and this test series was a part of the World Test Championship. This was India's first home series in the second edition of the Test Championship, and this started edition with the tour of England. And from across the world, a Myanmar court has sentenced oust leader Aung San Suu Kyi to 4 years in prison. She has been held responsible for inciting discontent against the army and violating the rules of the coronavirus. The news reports say that the military government spokesperson Zaw Min Tun said Suu Kyi has been sentenced to 2 years imprisonment under Section 505B and 2 years of imprisonment under the Natural Disaster Act. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the News Now web and keep reading the News Now daily and e-print paper. Jai Hind.